Shri Brahma Samarambham Shri Madhurya-kādambinī Asmadeva Paryantam Namami Guru Paramparam Shri Gurave Shri Gaurachandraya Savarikari Yugal Kisodaya Cha Rajadhamaya Guru Sattam Chittaya Radhavanaya Cha Namo Vindhaya Tulasi Devai Vyaya Kesavji Cha Krishna Bhakti Prabhu Devi Satyavaktai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srila Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद परम ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज समस्त गुरुवर्ग की सुचरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज वैष्णव एवं वैष्णवियों को प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल हम लोग मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठ प्रतिपादन के संबंध में आलोचना कर रहे थे। उसमें टीका में बताया इसको तप पदार्थ ज्ञान, तप विषय ज्ञान और तथा कृष्ण संबंधी ज्ञान, तप पदार्थ जीव संबंधी ज्ञान और दोनों के बीच में संबंध आलोचना किया था। अब इसमें कंटिन्यूएशन में बता रहे हैं सत्संग ही भक्ति साधन का एक मुख्य अंग है। हम भक्ति कैसे लाभ कर सकते हैं? सत्संग में। बिना सत्संग न पाओ पानी, बिना सत्संग से चाहे भक्ति नहीं लाभ कर सकते हैं। भक्ति साधन का मुख्य अंग क्या है? सत्संग। किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से साधु संग में उनके मुख से निरंतर हरि कथा निकलती है, उसको सुनने से क्या होगा? पहले ये 3 प्रकार का ज्ञान बताया। कृष्ण पदार्थ का कृष्ण संबंधी ज्ञान, तम पदार्थ का जीव संबंधी ज्ञान, जीव एवं कृष्ण के बीच में संबंध, तीनों का ज्ञान होता है। इसलिए बताया तस्मिन् महानलोकरिता मधुमित चरित्र शेष तस्मिन् मनोहरिता मधुमित चरित्र सरित स्रवन्ति
काजे पिबंत वित्त सनिपगाढ़ कर्ण स्तंभ संकीर्ण शोक मोहा तस्मीन महान मुखरितान। तो परम सत संत लोग क्या करते हैं, उनके सिमुख से क्या हरि कथा निकलती है। जैसे मानस सरोवर से कैलाश में जो सरोवर है, उससे बहुत सी धाराएं निकलती है, नदी नदी। तस्वीर मन मुखरिता मधुरी चरित्र, और संत के मुख से क्या निकलता है, जो मधु नामक दैत्य को वध किया। और मधु मतलब आसक्ति, हमारे संसार आसक्ति को जो काटते हैं। और क्या संत एवं सच्चिन्नति मनोवसंत मुक्ति दी, संत अपने तीखी वचन के द्वारा हमारे आसक्ति को काटते हैं। ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, जगत की आसक्ति को काटकर कृष्ण के चरण में प्रीति जोड़ देते हैं। ये मधुरी चरित्र अशेष परित सरित सवंती, ये उनके मुख से अमृत निकलता है। अमृत क्या क्या है, एक तो है स्वर्गामृत, स्वर्ग में जो अमृत है, ये क्या है, स्वर्गामृत पीने से कितने दिन जीते जिएंगे, एक मानव एक नहीं। फिर स्वर्ग में जाने पर क्या होगा, छिने पुण्य मर्तलोकम विसंति, पुण्य क्षय हो जाता है, इस जगत से आना पड़ेगा। जब कोई भी जीव स्वर्गलोक में जाता है, जानवर को आवाहन करते हैं, आइए पधारिए। और जब पुण्य क्षय हो जाएगा, तब उनको एक सेकंड रुकने नहीं देगा, धकेल देगा, गिरा देगा। ये नहीं देखेगा कि तुम सिर पर गिरोगे, सिर के बल पर हाथ के ऊपर हाथ टूटेगा, सिर फटेगा, ये देखेगा। स्वर्ग का काम क्या है, पुण्य के फल को काटता है। नरक में क्या है, पाप का फल को काटता है। जब पाप का फल समाप्त हो जाएगा, ये क्या करते हैं, तो जगत में आना पड़ता है। ये स्वर्गामृत, ये अमृत हुआ क्या था, ये समुद्र मंथन से निकला था। ये कितने सृष्टि हम देख रहे हैं, अधिकांश क्वेश्चन इसी से ही आया। ये ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप, और मेन ये कश्यप से सृष्टि है। कश्यप की बहुत सी पत्नियां थी, एक ही बाप है, माँ अलग अलग होने के कारण उनके बच्चे भी अलग अलग हुए। ये सबसे बड़ी पत्नी है, बड़ी वाली, उनका नाम दीति, उनसे द्वैत दानव हुआ। ये अदिति, आदित्य अर्थात देवता लोग हुए। से भी ये सांप, विनोद से गरुड़, चिड़िया, एक ही बाप है, अलग अलग माँ होने के कारण अलग अलग बच्चे हुए। एक दिन कोद्रु और विनोदा, ये लोग सब बहन भी है, सखी बहन, और एक ही से शादी हुई है। जैसे वसुदेव महाराज के जो देवकी, ये सब लोग सात बहन थी, और से शादी हुई। ऐसे बहुत लोग का होता है, एक ही व्यक्ति की बहुत सारा बहन की शादी हुई। जैसे मानधरा के 50 लड़कियां थी, सभी की शादी किससे हुआ, किसी से। ऐसे होता है। कभी एक घर में 2 बेटे हैं, एक घर में 2 बेटी, दोनों बेटे दोनों बेटी, 2 बेटी, ऐसे भी होता है। एक दिन कोद्रु कहा विनोदा से, अच्छा विनोदा ये बोल, तब तक विनोदा का बच्चा नहीं था, कोद्रु का बच्चा हो गया था। ये जो सूर्य के घोड़े हैं, इनका कुछ कैसा रंग है, बिल्कुल सफेद है, बोले नहीं काली है। अब दोनों बहन में ठन गई, बहन भी है, सोचती है, सूर्या कहा भी है। तो तू बोल रहे देख, क्योंकि ये सूर्य के घोड़े के कुछ सफेद हो तो मैं तेरे जिंदगी भर के लिए दासी बन जाऊंगी। अगर घोड़े के कुछ का रंग काला हो तो तुझे मेरे
दासी बन के जिंदगी भर मेरे साथ बिताना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी है दीनता से। आप अपने बच्चे को बुलाया, साहब को अच्छा बेटे ये बताओ, उनके जो घोड़े हैं उनके कुछ कैसा है? भैया घोड़ा भी सफेद है, कुछ भी सफेद है। जब तक मैं मरी रोने लगी, क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ? देखो ये तुम्हारी मौसी से मेरी बात हुई है, अगर घोड़े के कुछ का रंग सफेद तो मुझे दासी बनना पड़ेगा जिंदगी भर। अरे तुम लोग मेरे बेटे हो, इस विपद से उद्धार करो। भैया क्या करना पड़ेगा? एक काम करो, कल सूर्योदय के पहले ही तुझे जितनी घोड़े हैं अब उसमें तुम लपेट जाओ, ताला दिखे। ठीक है, तो जाके लपेट गए। जब सूर्य उदित हुआ, घोड़े तो सफेद हैं और कुछ सब काली काली दिख रही है, फिर दासी बनना पड़ा। अब करे क्या? कोई संगीता, उनके 2 अंडे थे विनता के, बच्चा कॉकबैक को फोड़ दिया। They had two. I'm sorry, I could not follow the chat box. I was muted. मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े स्तंभ है, खंबा उसके ऊपर बैठे। तो भैया आपने क्या किया? So, Madhav, what did you do? क्या कर दिया आपने? ये बहुत ठंडा लग रहा है, सूर्य के पास मुझे रख करने की व्यवस्था। I'm feeling cold. You take me near to sun. मैं सब समझता हूँ क्या होगा, क्यों आपने अंडा को फोड़ा? Actually, today the speaker has not been attached to Srila Gurudev's mic, so it's hard to understand. And I could not really understand what Gurudev is speaking clearly, and there is sound of traffic also. I will try to, let me try here something on Facebook. Okay, anyhow, with that I'll try later. I'll try do something right now, and later on I'll try it again. And is it me only who is not hearing correctly, or is it for all? I mean, the voice is very much pitched, and it is like. Hare Krishna. आप तो महाबली, आप सब तो जीत नहीं सकते। गुरु जी पृथ्वी का वस्तु नहीं है, ये स्वर्ग के लिए। ठीक है, मैं अपने माँ को दूंगा, फिर मैया मेरी मौसी को दे देंगे, उसके बाद लोग पालन कर लेना। ये माँ दासीपन से छूट जाए, उसका जो हो जाए, ठीक है। गुरु ले आए, आते समय जहाँ जहाँ पेड़ में बैठे थे। I don't think so Srila Gurudev can hear us because he's not having anything, earphone or something, and it will disturb him also. Translation. There is Kumbha, which is like taking bath in a holy river. It takes place in many places. Now, something was given to Kadru. He said, "You all go and take bath." No, Maharaj cannot hear me. Srila Gurudev cannot hear me when I speak. It will disturb him, of course. Now, when the snakes came later on, they could not find nectar. Where the nectar was kept, in that place, except for in place of nectar, they kept poison. So the snake touched it, and henceforth, rather getting nectar, they got poison. And since then, all the snakes are getting poison. So what happened next? I'm not going in details. This is Swarga Amrita. Nectar in heaven. Another is Moksha Amrita. Nectar of liberation or salvation. This is Mukti, liberation. Even if I want to give
this mukti, this liberation to my devotees, they don't want to take it. And one is Kathamrit, the Harikatha, which is like nectar. This is third type of nectar. 7 के बाद हरि कथा हो गई 7 दिन इसी पुराण में एक प्रकार का वर्णन है और It is mentioned in the इसी Puran. प्रकार का वर्णन है In some Puran there is different sort of mentioning. It is mentioned एक ब्राह्मण का नाम था कश्यप there was a Brahman named Kashyap. आयुर्वेदिक डॉक्टर था He was a very big Ayurvedic doctor. परीक्षित महाराज सांप के दंशन से He got to know Parikshit Maharaj has been bitten by a snake. रास्ते में तक्षक मिले ब्राह्मण में से कहाँ जा रहे हो Takshak, there is a snake. He took Pandit, met him in path. He said, "Where are you going?" He said, "To help Parikshit." He said, "Why you are going there?" "To help him." "How can you help him?" He said, "If Takshak will be killed, he'll become okay." He said, "Okay, I am Takshak." He said, "Let me bite this tree. It will burn and try to heal it." He took form of snake and bit the banyan tree root. In some time, the tree started burning. He said, "Gosh, this poison is really dangerous." The doctor said. He said, "Now you see," the doctor said. So don't worry, let me do it. Let me heal it. He pulled out some herbs and threw it on the tree. Within less time, the time it took to burn, less than that, the tree got healed and again became green and good. चले गए उस समय से मन में आसक्ति घट गया भगवान के भजन का मन में आसक्ति नहीं So what Takshak did was he gave him money or wealth, a lot of wealth, said, "You are going for this only, take it from me." And he returned and went back. So this is difficult, attachment to wealth and attachment to Krishna. So he was attached to wealth and he returned back. This is what Gurudev is trying to tell. Bhagavad, it is mentioned, after 7 days of Harikatha, Kashyap was coming. Harikatha, Shukdev Goswami, Parikshit Maharaj. Kashyap was coming, the doctor. So it is mentioned that Kashyap arrived after Harikatha ended. Means Maharaj had already left Parikshit Maharaj. So one who goes to Bhagavad Dham, he will never return back. This is what is mentioned. Kashyap came, he tried to heal, nothing happened. Because Parikshit Maharaj had already left this world for the holy abode of Krishna. There is nectar in ocean, there is nectar in ocean. Oh, there is nectar in moon. Some says there is nectar in lips of woman. So all are fighting with each other on their opinion about where nectar is. He was a Vaishnava. So there is no nectar in ocean. If there is nectar in ocean, then the ocean should taste sweet. Because if there is nectar in ocean, nectar is very sweet. Why is ocean water salty? So that means that ocean is not having nectar. Then coming on moon, there is no nectar on moon. Due to light of moon,
अगर चंद्र न हो If there is no moon, पुष्ट नहीं होगा। no जैसे fruit अनाज है, will have nectar. No fruit गेहूं है, will have जौ है, the धान है, taste, the भुट्टा है, juice. That दाल है, कोई पुष्ट नहीं the है। fruit will not develop properly. It will not सब happen if अंत there is साफ no moon. होगा, तो छिलका है और तक कुछ रहेगा। जो चंद्र से अमृत है, It will remain dry otherwise. अब वो वैष्णव चंद्र में नहीं है, मतलब क्यों नहीं? क्षय चंद्र का क्षय होता है। अमृत जिसके He पास said, रहेगा कोई if there क्षय is नहीं होगा। nectar in moon, how can it hide itself? You know the crescent क्षय moon, होता है it goes from full to और half, half, अमावस्या half, के and then बाद से crescent. बढ़ता So है, it cannot तो happen. क्षय Why कब would it होता है? happen? It will always remain full if it had nectar. अमृत रहने पर घटेगा नहीं, सबसे बढ़ता This ही was the रहेगा। discussion. It will not reduce its size. Oh, means won't become half. It will not wax. Yes, the exact word is the moon would not wax if it is having nectar. It will always remain the way it is, circular and spherical. So there is no need. So this is another thing which was said about there is no. Yeah, it will not wane. Yeah, yeah. Sorry. So there is no nectar on moon. जहाँ Oh, sorry. अमृत रहे उसको डलेगा नहीं। सांप तो गुरु से डरता है, इसको डर नहीं है कहाँ? Now somebody said snake is having nectar on its head. So he said no, it cannot be possible because snake fears it. One who is having nectar, he will not fear anything and anyone. But because snake has snake fears its gem, that somebody might steal it. So that proves that he is not having nectar. Where is nectar? Nectar is in Harikatha coming from a bona fide Guru or Vaishnav. Because one who hears it will not have to come to this world again, will go to Krishna's world. This is real nectar. In 2034, again there will be a solar eclipse. This type of solar eclipse that the whole sun will look like a diamond ring, this will now happen 234. Apart from that, it is taking place tomorrow. Like, right? Oh, so this type of lunar eclipse will take place in 2034. We will close the temple before solar eclipse will start, and somewhere around 2:30 p.m. we will resume. We will start preparing bhog for Krishna. Nobody needs to come to temple. Just stay at your home. Day after tomorrow is Gundicha temple cleaning. Gundicha Marjan. We will do Gundicha temple cleaning. You can come the way you come daily on that day. 95 के बाद से पहली बार मुद्दा गर्मी में रहेगा। सब समय मुद्दा के बाहर ही रहता था। झाड़ू, फूल झाड़ू, नारियल झाड़ू, दूध झाड़ू, नाखून से लगाएंगे। 23 तारीख को रथ यात्रा है। और अब तो गुंडीचा मंदिर सुबह 8 बजे होगा। Gundicha Mandir will take place around 8 in the morning. The cleaning of temple will take place 8 a.m. in the morning. We will place balloons, we will decorate. This is what Gurudev is saying. No, apart from that, nobody will be allowed to enter the temple before that. Now coming to Gurudev is singing Shlok. Only by association with a sadhu, a saint, we will get the eternal mercy. Will get the best mercy. We will become successful and perfect. If we have Gyan, knowledge and Bhakti both, then they might help us little bit to enter the kingdom of Bhakti. But Bhakti itself
is never having any expectation of knowledge, yoga or karma, good deeds. Karma means fruitive activities. There should be no mixture, or there should be no adulteration of gyan means knowledge, karma means fruitive activities with bhakti. It should be pure. इसमें दिखा रहे हैं It is being shown. संस्कृत में मुक्ति ददाति परिचित मनोभक्ति योगम भगवान मुक्ति देते हैं आसानी से Bhagwan can grant liberation very easily, but will not give bhakti. Why? Which is being explained. Please forgive me if my translation is not good enough. I will try to improve it. Hare Krishna. You can let me know what I need to improve. It is said, Bhagwan can grant mukti very easily, but he will never give, means liberation very easily, but he never gives bhakti, devotion. He never gives that easily. Mukti means liberation, bhakti means devotion. Bhagwan needs to see. Bhagwan sees who is the person asking for what, like Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhan grants anything and fulfills everything to anyone desiring anything. But if you ask Krishna Bhakti Radha Ras, he doesn't grant that easily. What is the reason? Otherwise, Govardhan becomes very happy when he grants bhakti, but doesn't grant that easily. Same way, Krishna does not grant bhakti that easily. He can give mukti. Why? Because if he grants bhakti, mukti is very easy. He can give you liberation, but if he gives bhakti, then he gives himself to you also, and he doesn't want to give himself to you that easily. Otherwise, he will become bound to you. Again, Gurudev is explaining why Krishna doesn't give bhakti. Bhakti is doing bhajan. That's good. They have desire for Krishna's mercy, but still they have not completely left the other desires. Except for pleasing Krishna, there is knowledge, fruitive activities, and mukti. These desires are there. So if you have this, Krishna will not give bhakti that easily. Till the time you are not lamenting, you are not tadap means like you're not feeling the pangs from separation of Krishna, you will not get bhakti. You need to feel the separation. You need to have the desire, the ardent desire, and only desire to get Krishna's bhakti, Krishna's mercy, to get bhakti. Like many people are saying Ram, 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 Ram. Why? Just they want water. You give them water, they are okay. They will not chant anymore. That is, they are not chanting for Ram, they are chanting for water. But they are chanting so they will get fruit. But they will not get the eternal fruit of bhakti. There's a baby and it's crying. Mother is busy in work, and what is she saying? I'm coming, I'm coming, I'm coming. But the child, the baby is crying. After some time it will become, the baby will become quiet. But after some time again he will resume crying. So what mother does? She brings little bit toys and sounds them little bit around and chan 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 chan. The baby looks at it, becomes quiet a bit. But after some, he will play with the toys. But again, after some time, he will start crying because he's hungry. And after some time, when the work is done, mother will come and will make the baby drink milk. So till the time you don't lament like the baby was crying, you don't cry for Krishna, you will not get bhakti. You have to cry like the baby was crying for milk. Time and again he was getting everything, still he was feeling the pain. कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण भजन करने पर भुक्ति अर्थात भोग की समान
What does Krishna do when you are doing bhajan? He gives you bhog. He satisfies your desires, give you things that your desire will increase to for sense gratification, gives you mukti, gives you everything except for bhakti. In a way, he's testing you whether you really want bhakti or you want something else. You are having pure bhakti or are you having mixed bhakti, miscellaneous bhakti? Those who are having other desires while doing Krishna's bhakti, they won't get bhakti. But those who are having no desires apart from satisfying Krishna for his pleasure, Krishna's pleasure, they get bhakti. Those people who are without any desire are doing bhajan of Krishna, they get the mercy of Bhakti Devi and they get the service of Krishna. After creating the universe, Karnadakshai Vishnu took form of a Purush and entered each and every Brahman, each and every universe as Garbhodakshai Vishnu. And this same Garbhodakshai Vishnu resides into the heart of all Jeeves. In Treta Yuga, Madhurya Purushottam Bhagwan Sri Ram came. In Dwapar Yuga, Sri Krishna came. Leela Purushottam. Maryada Purushottam Ramchandra, Leela Purushottam Krishna Chandra. Both are Krishna Chandra, Ramchandra. Chandra means moon in Moon dynasty. I guess today the earphones are a little different. Anyhow. So Ramchandra, Krishna Chandra, Gaur Chandra, or Chandra 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 means Moon dynasty, Moon dynasty, Moon dynasty. So Gurudev is asking who is Purushottam. So all are Purushottam. When Ram is Maryada Purushottam, Krishna is Leela Purushottam, Mahaprabhu is Prem Purushottam. This is what Gurudev is asking, waiting for the answer. Gurudev is asking who are three Purushottam. यदि कोई कृष्ण को भजन करते हैं अन्न कामना लेकर के न मांगने पर भी कृष्ण उनको अपना चरण देते हैं अथवा अपनी सेवा देते हैं those who are doing is a bhajan of Krishna without any other desires, even when they don't want, Krishna gives them his service of his holy feet or his service, one and the same thing. यदि अपना ही है इसको देना ही है तो बजा के देंगे दूसरे का भजन को न मांगने पर क्यों देता है दूसरे का है इसको अपनाना है इसलिए इसको थोड़ा सा लालच देके पहले लाओ फिर इनको इस लाइन में लाना है Who newly enters devotion, Krishna gives them a little more material desire in order to just attract them, seek their attention, and after that, so that he could align them on the path of bhajan. And then slowly, gradually, they will increase on, they will develop
श्री on the कृष्ण path of bhajan, and one day they will कृष्ण understand भक्त को about Nishkam bhajan, छोटा छोटा bhajan without any desires. मतलब मुस्लिम दे दिया कृष्ण बन जा मैं बच गया कोई प्रेम भक्ति नहीं देते कृष्ण प्रेम भक्ति क्यों कृष्ण को प्रेम भक्ति वशीभूत हो जाएंगे देते हैं If कैसे Krishna does not give prema bhakti very easily, why? If he gives you और prema bhakti, स्वरूप he will जगह से have to be हरिनाम bound to you. अच्छा इच्छित हो और सब समय भजन को उनको देते हैं जब And to who Krishna gives prema bhakti? One who is dikshit by Sadguru and who is doing bhajan of Krishna without any other desires, following all the Guru Varga, he only gets Krishna bhakti. And the rules mentioned in scriptures. ऐसे नहीं प्रेम भक्ति कृष्ण भावनी शक्ति की वृत्ति है वृत्ति होने के कारण स्वरूप आनंद में कपालानंद प्राप्त करते Prema bhakti is propensity of Sarup Shakti of Krishna, internal potency of Krishna. Propensity. जैसे So, पेड़ के लिए फल फल नहीं होता just है like माँ के लिए बच्चा fruit फल for नहीं tree होता है is not weight, is not ऐसे burden. ही भगवान के लिए Baby भक्त for फल mother नहीं is not होता है burden. Same way, ये Bhakta is अम्बरीश not महाराज burden for Krishna. क्या नहीं Just किया like अम्बरीश Ambarish महाराज के Maharaj. लिए कृष्ण ने बताया नमो Krishna said, ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण it is said हिताय for च Krishna. जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ब्राह्मण को देवता के रूप में पूजते हैं Brahman is worshipped as Devata, means demigod ऐसे or God. जब गए सुदामा विप्र Just like Sudama went to Dwarka to ऐसे Krishna, कैसे कृष्ण ने हाथ से चरण धोया चरणा में Krishna washed अपने his सिरा feet सब जगह में छिड़काव किया कैसे and कैसे कर रहे हैं sprinkled that water everywhere in his सुदामा palace. विप्र Such सोचते respect हैं given to Sudama. बिना पैसे में मुझे कर रहे हैं तब कृष्ण को Sudama thought maybe he does तो not know याद who I है am, that I'm जो his friend गुरुकुल from में थे school. कैसे आंधी बागी Maybe he सब thinks me मदिरा to में be a कैसे Brahman याद है only. Then Krishna, वो understanding his heart, said, क्या hey, you था remember what we used to do in school? क्या है नमो How we used to ब्रह्मण go, how we देवाय were caught in the forest, वो ब्राह्मण in the हिताय flood. च So then गौ के और ब्राह्मण Sudama के हित के understood. लिए So करते Go हैं Brahma Hitaya. So one who takes care of Go and जगत Brahma पिता cow कृष्ण दो and ब्राह्मण हित के लिए क्या किया Brahmins. गोवर्धन धारण कर लिया गौ को बचाने के लिए गौ मूल्यों का संपद है जगत हिताय Cow is कृष्णाय property of गोविंदाय Krishna. नमो जगत के And हित करने वाले Krishna has और so many गोपियों times को प्रदान protected cows करते हैं from demons, from ये other क्या हुआ problems. यही जब भगवान के भक्त अम्बरीश महाराज उसे So same दुर्वासा का Ambrish रक्षा Maharaj किया क्यों साधारण नियम एकादशी करने पर समय के अनुसार व्रत का पालन was करना protected by उसको Krishna. फल नहीं How? मिलता If you दुर्वासा don't जी break your आए Ekadashi fast on correct time दुर्वासा on जगह Dwadashi, शिष्यों के you साथ don't get the fruit of Ekadashi. पता नहीं ये तो Ambarish सब Maharaj had ठीक है kept Nirjala करता Ekadashi, रहिए fasting without water on और Ekadashi. जानबूझ करके Next देर day, लगा रहे हैं Durvasa Muni came and said, we will अम्बरीश take prasad महाराज together. Now Durvasa Muni ब्राह्मणों को went बताया to क्या take किया bath जब and he's आपने निर्जला किया है knowingly he's taking more गंगा time. में So एक Ambarish Maharaj said, what लेने should be पर done because time is passing by. Only 20 minutes भोजन were भी नहीं है left, half danda आपका व्रत भी for them. रह जाएगा So some निर्जला some खाकर ministers एक बूंद suggested you पानी take में से little drop of water. बन जाता है चारणा You will के not लिए eat, so your ये भोजन vow भी नहीं to है Durvasa that और we will eat together will be आपका kept also, इसका and your स्मरण भी नहीं होगा fasting ठीक है of दे दिया Ekadashi will also दुर्वासा be इसी fruitful because you will break निष्पाप के by स्वभाव से taking a जान drop लिया of water. तो So he आप took one drop of water and broke his भगवान fast, Ambarish Maharaj. ऐसे करते हो The time he took drop हो of जाता water, है तो Durvasa क्या Muni क्या saw him हुआ and he said, you rascal, you do भगवान something क्या like किया this. First of all, you अम्बरीश का tell me you मोक्ष will दे not eat and करके drink without me, and now you are breaking your दुर्वासा को fast ऐसे without तैसे me. कर दिया And फिर Durvasa became very उसके बाद angry. क्या हुआ यही And करते you know रहे what happened next? सब Sudarshan came साधनों and में how केवल he भस्म made सिवा fury. He उनके made सारे भक्त Durvasa run from here अपने and there. प्राण So उपास this is देने how के Krishna लिए protects his devotees. This is what is mentioned, and Gurudev has ended his class. उद्धव जैसे बताया 10 The way I have 46 told, से बज के 17 मिनट तक तरंग का from समय मथुरा में 1 10:15 घंटा in morning 31 to मिनट 2:17 in afternoon, गर्मी में मथुरा आने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन भाई स्वामी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं no eating, no लॉकडाउन के घर drinking, में no going to washroom, only doing Harinam. हरिनाम करें Do not come to temple. मंदिर मार्जन सुधार Just करें stay at home, do Harinam, do सब लोग Kirtan, आते read रहिए Grantha, और read क्या scriptures. होगा और क्या होगा सब झाड़ू फूल झाड़ डालने में से लाते हैं सब ले आएंगे अब दूसरे दिन क्या है And next day we have told it is Gundicha margin. We will bring brooms and all to clean the temple.
I will try translate this lecture again, and I will send a lecture